Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to discuss chapter probability with you. It's from NCERT mathematics. So let's start. Firstly, let us discuss some things like what studying probability like. Okay. So what is the event? Event is something like जिसकी हम लोग probability निकालेंगे. Like you will be given something that there are three red balls and five black balls in a box, and what is the probability of taking the black ball out of the box at first go. So this is known as the event. मतलब जो आपको दिया जाएगा जिसकी आपको probability निकालनी पड़ेगी, that thing is known as the event. ठीक है. उसके बाद टाइप्स ऑफ इवेंट्स मतलब ये दिस इज नॉट एज सच इम्पोर्टेंट बट देख लो. इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स वो होते हैं. इम्पॉसिबल इवेंट्स वो जो कभी हो ही नहीं सकते. श्योर इवेंट्स आर दोज विच will definitely happen. Matlab, like if you will toss a coin, you will definitely get either a head or a tail. So if you are given that what is the probability of getting a head or a tail on costing a toil, so it is on costing a coin. Coin, sorry. So it is a sure event. Obviously बात है कि अब आप coin को toss करोगे तो हमेशा head या tail ही आएगा. So इसकी probability वन होगी. That are known as sure events and impossible events. Then simple event, same thing. The event has one sample point. मतलब जिसमें सिर्फ एक ही sample point होता है उसको अपन लोग simple event बोलते हैं. Compound event जिसमें multiple sample points होंगे जैसे कि exactly one had appeared, at least one had appeared, at most one had appeared. So इसमें tossing a coin thrice में कितने सारे events possible है तो इसको अपन लोग बोलेंगे compound event. लेकिन ये सब काम का नहीं है, ये सब नहीं पूछते हैं एग्जाम में. तो इसके बाद let's come to complementary event. What is complementary event? Complementary event is nothing but just you have to like complementary name only says like that complements the event. Like uh, what is the probability of that it is that the boy is saying truth. So इसका complementary event क्या हो जाएगा? What is the probability that the boy is saying false? So you have to just complement it, nothing else. Now comes the main thing: mutually exclusive events. What are mutually exclusive events? Like in the experiment of rolling a die, a sample space is this. Consider events an odd number appears and B an even number appears. Clearly, event A excludes the event B and vice versa. In other words, there is no outcome which ensures the occurrence of events A and B simultaneously. मतलब क्या है इसका? मतलब आपको दो चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोली गई है और वो दोनों की प्रोबेबिलिटी कभी सेम आ ही नहीं सकती क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना. देखो, एक इवेंट में हम लोग निकाल रहे हैं हेड, एक इवेंट में हम लोग निकाल रहे हैं ऑड और एक इवेंट में हम लोग निकाल रहे हैं इवन. तो ऑब्वियसली बात है ऑड नंबर कभी इवन नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता. तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन द सेंस जो प्रोबेबिलिटी इसकी हम निकाल रहे हैं जिसकी उसका इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते. सो इन टाइप के इवेंट्स को अपन लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. फिर एक्सॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जो पूरी सैंपल स्पेस को कवर कर लेते हैं. मतलब जिन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मिलाने पे अपने को फाइनल आंसर वन मिलता है उसको अपन लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स. जैसे कि कोई अपने को डाइस दिया हुआ है तो अ नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5 अपीयर्स एंड अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स. तो इन तीनों को मिलाएंगे तो हमेशा अपने को पूरे डाइस के 6 के 6 मिल जाएंगे. नंबर लेस देन 4 में 1 2 3 4 आ जाएगा. नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5 में 4 भी आ जाएगा और नंबर ग्रेटर देन 4 में 5 और 6 भी आ जाएगा. तो इन तीनों इवेंट्स को मिलाएंगे तो अपने को डाइस के 6 फेजेस अपने को मिल जाएंगे. तो ऐसे इवेंट्स जिसको कंबाइन करने पे पूरी सैंपल स्पेस कवर हो जाती है उसको अपन लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स. सिंपल. ठीक है. उसके बाद लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 14.1. So let's start with the first question. Now, the first question: a die is rolled. Let E be the even die shows 4 and F be the even die shows an even number. Are E and F mutually exclusive? Obviously बात है. एक में बोला die shows 4, F में बोला die shows an even number. So they are not mutually exclusive क्योंकि 4 भी एक even number है. So they are not mutually exclusive. Why? Because 4 is also an even number.
ठीक है, क्योंकि फोर भी एक इवन नंबर है, तो अपन लोग बोल सकते हैं कि डाई शोज फोर और डाई शोज इवन नंबर है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अगर मैं सिर्फ डाई शोज इवन नंबर को भी लूंगा तो भी ये केस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि फोर भी एक इवन नंबर है, तो ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, सिंपल। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर टू में बोला है डाइस थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अ नंबर लेस देन सेवन, ऑलवेज आएगा, मतलब नंबर इज ऑलवेज लेस देन सेवन ना, क्योंकि अपने को पता है डाइस के अंदर छह तक ही होते हैं। सो अ नंबर लेस देन सेवन विल ऑल्सो ऑलवेज बी देयर। सो एक मिनट। ओके, सो लेट्स मूव ahead. A number less than seven, always possible. A number greater than seven, never possible. A multiple of three, two times, like three and six. Then a number less than four, one, two, three. An even number greater than four, it would be only six. And a number not less than three, it is one and two. So there are only two cases possible. Okay, so इस तरीके से अपन करेंगे. Then we are asked also find a intersection B. So let me write it down first. A would be A would be a number less than seven, so it is always possible. Always possible. ठीक है, और इसमें वन टू सिक्स सारे के आ जाएंगे. बी वाले में क्या है? बी वाले में होगा नंबर ग्रेटर देन सेवन, नेवर पॉसिबल. ठीक है. फिर सी में a multiple of three, a multiple of three, it can be three और सिक्स. ठीक है. उसके बाद डी में क्या बोला है? डी में बोला है a number less than four, so one, two and three. Then E में an even number greater than four, it will be six only. And F में a number not less than three, so it would be not less than three, so it would be three, four, five and six. ठीक है. फिर आपको मुझसे पूछा है A यूनियन बी, दिस इज साइन ऑफ यूनियन, सो उसको ध्यान रखना, इसको यूनियन का बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन का साइन. सो ए यूनियन बी इज नथिंग बट जो ए में भी और जो ए और बी दोनों में आएगा, मतलब जो दोनों में, सो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन. सो इट वुड बी ए इज ऑलवेज पॉसिबल एंड बी इज नेवर पॉसिबल, सो इट वुड बी जस्ट वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स. ठीक है. देन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, इट वुड बी जीरो, मतलब कुछ भी नहीं होगा, नल सेट होगा. वाई? और इसमें ऑलवेज पॉसिबल, इसमें नेवर पॉसिबल, क्योंकि नंबर डाइट, तो इसमें क्योंकि इसमें नंबर ग्रेटर देन सेवन कभी पॉसिबल ही नहीं है, और इसमें नंबर लेस देन सेवन है, तो इन दोनों का भी कोई ओवरलैप करेंगे नहीं, दैट्स व्हाई. फिर बी यूनियन सी, इट वुड बी, जो बी में भी और सी में भी है, बी में और सी में सिर्फ थ्री और सिक्स ही आएगा. ठीक है, थ्री एंड सिक्स. फिर बोला है ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, so it would be intersection F would be E is six and F is three, four, five, six. So only intersection में से six आ रहा है दोनों में, जो दोनों में होता है कॉमन, उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो इसके इसमें आ जाएगा सिक्स. ठीक है. फिर है डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी इंटरसेक्शन ई में, डी में है वन टू थ्री, ई में है सिक्स, तो दोनों में कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर भी नल सेट. ठीक है. उसके बाद ए माइनस सी में क्या होता है? ए माइनस सी में क्या करूंगा, ये टर्मिनोलॉजी समझ लेना. ये यूनियन का साइन होता है, इंटरसेक्शन का साइन होता है. यूनियन में दोनों में जो होता है वो लिखते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगा वो आएगा. ठीक है. तो ए माइनस सी में जो एलिमेंट्स ए में है वो लिखेंगे, उसमें से जो सी में एलिमेंट्स उनको हटा देंगे, तो जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे ए के वो लिखेंगे. तो ए में सारे, सी में थ्री एंड सिक्स, सो बस थ्री और सिक्स हट जाएगा, इट वुड बी वन, टू, फोर, फाइव. ठीक है. देन इट इज डी माइनस ई, डी माइनस ई वुड बी, जो डी में है लेकिन ई में नहीं है, मतलब वन टू थ्री एंड सिक्स, मतलब वन टू थ्री अपन लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ई में वन टू थ्री तीनों ही नहीं है. फिर ई इंटरसेक्शन
एफ कॉम्प्लीमेंट। सो इट वुड बी एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब जो एफ में है उसके अपोजिट वाले। सो लाइक एफ में यहाँ पे 3 4 5 6 है, क्या नहीं है, 1 2 नहीं है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा 1 2। और ई में है 6, तो इन दोनों में कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका भी नल सेट हो जाएगा। ठीक है। एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, एफ कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा 1 and 2, क्योंकि इसमें 3 4 5 6 है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट में होगा 1 2 सैंपल स्पेस के हिसाब से। और 1 2 और 6 इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। देन एफ कॉम्प्लीमेंट वुड बी मैंने बताया 1 2। ठीक है। सो इस तरीके से करेंगे। फिर आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। मतलब अपने को वापस इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है बेसिकली। सो इट इज द सम ग्रेटर, द सम इज ग्रेटर देन 8। सो ऑब्वियसली बात है, पेयर ऑफ डाइस को रोल करेंगे तो पहले देखो सैंपल स्पेस क्या होगी अपनी। थर्ड वाले में अपनी सैंपल स्पेस क्या होगी, अपनी सैंपल स्पेस थर्ड वाले केस में होगी, क्योंकि अपन लोग पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हैं एंड वी आर रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप। सो इट वुड बी 1 1 हो सकता है, 1 2, 1 3। Okay, then it can be 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। Okay, then it can be ये आपको बताना चाहिए, कई बार काम आता है कि दो डैश रोल करने पे क्या सैंपल स्पेस आती है। सारी कॉम्बिनेशन आपको बतानी चाहिए, 36 कॉम्बिनेशन आएंगे। ओके, देन 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ओके, देन लास्ट कॉम्बिनेशन, लास्ट नहीं है मतलब सेकंड लास्ट, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। ठीक है। देन 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6. So these will be the 36 combinations which you will be getting when um rolling two pair of dice. Okay. So then what we are asked, the sum is greater than 8. Sum is greater than 8. So check here. How can we get the sum greater than 8? Let's write down the possible combination. For sum greater than 8, what we need is we can do like 1 plus 7 or 2 plus 6 or 3 plus 5 or 4 plus 4. Okay, these are the possible combinations and the reversals like 7 plus 1, 6 plus 2, 5 plus 3 and 4 plus 4 का तो एक ही रहेगा 4 plus 4. So how many combinations? So 7 such combinations are possible. ठीक है, कौन कौन से? 1 7 2 6 3 5 7 1 6 2 5 3 एंड 4 4। ठीक है। तो सम इज ग्रेटर देन 8 पॉसिबल है। देन बी 2 अकर्स ऑन आइदर डाइस, दोनों पर 2 अकर हो तो उसका एक ही बार होएगा 2 2 में। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 आएगी। ये प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ेंगे, वैसे ही कुछ काम करने जो भी अपन पढ़ रहे हैं, ये बस एक टाइप का बेस बिल्ड कर रहा है। देन सी में क्या है, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। सी वाला सॉल्व करते हैं, सी वाला अच्छा है। सी वाले में क्या बोला है, सी वाले में अपने को बोला है द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो सम एटलीस्ट 7 है। तो पहले तो वाले कॉम्बिनेशन को जिसमें सम एटलीस्ट 7 आ रहा हो। सो बताइए क्या इसमें सिर्फ आपकी क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू थिंक द स्टोरी है, नथिंग एल्स। पहले अपन यहाँ पे इवेंट्स बिल्ड कर रहे हैं कि इवेंट्स होते कैसे, अपन लोग इवेंट्स को देख कर सकते हैं, उसके बाद अपन लोग इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है। सो सी में है सम इज एटलीस्ट 7, इट कैन बी पॉसिबल बाय 1 plus 6
comma 2 plus 5, comma 3 plus 4. Okay, and their counterparts with sum of 7. And some for sum of 8, we need these ones. Because it is at least 7, no? So we have to take 7, 8, 9, 10 all. For 9, it would be 1 plus for some greater than it was saying. Okay, it was some greater than it. I thought it was some equal to it. For some equal to it. Okay. Then for some at least 7, I will solve the part again because I take it to be some equal to it, so it is wrong. So now first let's solve the C part. Sum is at least 7, so we will get 7 by using these combinations. We will get 8 by using these combinations, and this is also not possible. I didn't thought it. Actually, 7 is not there on the dice, so only 5 combinations are there. And from here, remove this. Then for 9, what we need 1 plus 8, that is not possible. 2 plus 7 is also not possible. So we need 3 plus 6, comma 4 plus 5. Okay, and their counterparts. Then for 10, we need 4 plus 6 and 5 plus 5. For 11, 5 plus 6, and for 12, 6 plus 6. So these many combinations are there and their counterparts. So how many combinations are there? No. Then we have to take one more thing and a multiple of 3. That is sum is a multiple of 3 also. So see, this is not a multiple of 3. So remove it. 5 plus 2 is also not a multiple of 3. Remove it. 3 plus 4 is also not a multiple of 3. 6 plus 2 is also not a multiple of 3. 5 plus 3 मतलब जितने भी 8 वाले हैं 7 वाले हैं सब हटा दो सिर्फ 9 वाले बचे 9 and 12. So these two are for 9. Then remove 10 ones also. Basically, you have to take only sum of 9 and 12 because that are only the multiples of 3 and rest you have to remove. So this is the sample space for your C part. It's not sample space, the thing which they want actually. So what we needed a sum at least 7. So that could be 7, 8, 9, 10, 11, 12. And then they also, the sum should be a multiple of 3. So sum can be only 9 and 12. So 9 can be achieved using 3 plus 6 and 4 plus 5. And 12 can be achieved using 6 plus 6. So how many combinations are possible? Combinations possible 3 plus 6, 4 plus 5, 6 plus 3, 5 plus 4, and 6 plus 6. So 5 such combinations are possible. Okay. And similar way we can do the A part. Yeah, initially I solved it using it equal to it, so it was wrong. Now you can do it as I've told the C part. Okay. Then what is asked? Which pair of these events are mutually exclusive? What is mutually exclusive? I told you which do not overlap, which do not collapse, which do not overlap actually. So which are mutually exclusive. A and C can't be mutually exclusive because there's some greater than 8, so it would be 9 also, 12 also, and in C we are getting 9 and 12. And 2 occurs on either die. Because when 2 occurs on either dice, we will get the sum of 4, and which is not there in A also and which is not there in C also. So A and B and C are mutually exclusive events. So A and B or B and C are mutually exclusive. ठीक है, क्योंकि बी में अपने को सिर्फ 2 plus 2 4 मिल रहा है और इन दोनों में एक में सम ग्रेटर देन 8 एंड एक में सम एटलीस्ट 7. So 2 plus 2 will not be there in both. And A and C are not mutually exclusive as I told you because here also we are getting a sum of 9 and 12 and here also. So actually A and B and C are mutually exclusive. So let's move to next question. For 3 coins are tossed once. Sorry. 3 coins are tossed once, let 8, the even 3 head shows. पहले देखो 3 coins are tossed. So क्या sample space हो सकती है? अपने सबसे नीचे सबसे पहले sample space लिखना है. 3 coins tossed. So sample space क्या होगी?
sample space is equal to head, तीनों पे हेड आ जाए, या फिर तीनों पे टेल आ जाए, या फिर हेड हेड टेल और हेड टेल टेल और टेल टेल हेड और टेल हेड टेल और टेल हेड हेड and head tail head. Then we have taken single T, head tail head THH and HHT. Okay. Then we have taken triple T. Then we have to take just double T also. Zero T is here. Then double THTT, TTH and THT. Okay. All the combinations are taken. How you can verify that? You can start with anyone. Like you can start with tail. So for zero tail it is HHH. For single tail it would be HHT, HTH and THH. So we have taken all the three. For double tail we need tail tail head or head tail tail or tail head tail. Only these three combinations are possible. We have taken all these three combinations. So basically, um, we will get a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinations. So sample space contains 8 combinations. Then what is asked? At A denote the event 3 heads shown. उसके probability से 1 ही है, इसे एक ही बार आ रहा है. B denote the events 2 heads and 1 tail. These type of questions can be asked, that what are mutually exclusive and simple and compound events. तो मतलब आपको इवेंट्स दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसमें से कौन सा इवेंट कौन सा है, तो वो आपको बताना पड़ेगा. तो फोर्थ वाले केस में विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हो जाएंगे. ए में दिया हुआ है अपने को 3 H शोन, मैं लिख देता हूँ. ए में तो आएगा अपने पास हेड हेड हेड. फिर बी में क्या आएगा, बी में आएगा क्या है, बी 2 heads and 1 tail shown. 2 heads, so it can be head head tail, it can be head tail head, or it can be tail head head. ठीक है. देन सी में क्या आएगा, सी में बोला है 3 tails show and डी डिनोट 3 tails shown. अच्छा, तो टी टी टी. एंड डी में क्या बोला है, डी में इट इज सेइंग a head shows on the first coin. So it can be many cases. Head shows on the first coin, no? So head is on the first, this is confirmed. Then second can be head head, second and third. Then again first is head, then second can be tail and third can be head. And first is head, then second can be tail and third can also be tail. Then first is head, second is also head, third can be tail. So these are the possible events which can be there, because you have to just fix the first coin and then you have to vary the rest too. So there are 4 such combinations. Now you have to tell which are mutually exclusive. Mutually exclusive मतलब वही जो overlap नहीं कर रहे हो. Then A and B are mutually exclusive, no overlapping. B and C are mutually exclusive. A and C are mutually exclusive. A and D are not there because head and head are there. So A and D are not. B and D are also not there because they are also overlapping, and C and D are there. So mutually exclusive कौन कौन से हो जाएंगे? Mutually exclusive. Mutually exclusive. 1 second. So it will be A and B and A and E, then B and C, then C and D. C and D. So I hope you got that. Then we ask what simple events. So simple would be simple that I told you that इसमें से एक ही अपने को outcome मिले. So that are A and C are simple events. A and C, okay. Then we are asked what compound event. So compound event would be B and D.
जिसके multiple outcomes possible that are known as compound events, and जिसका सिर्फ एक ही outcome possible that is known as a simple event. तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था C. So here I told you about that an event has only one sample point of sample space. It is called a simple event. When there's more than one sample point, it's called a compound event. So here B and D are compound events and A and C are simple events, and mutually exclusive I already told you. Okay, so let's move ahead. Um, Here also we can tell which are simple and which are compound. A number less than 7 it can be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is compound event. And a number greater than 7 not possible. Multiple of 3, here also we are having two events, 3 and 6. So it's also a compound event. Because see, what is compound event? Hmm. You see, if an event has more than one sample point, it is called a compound event. For example, the experiment of tossing a coin thrice. Exactly one had appeared. Exactly at least one had appeared. At least one had appeared. At most one had appeared. So when there are multiple sample points possible, so we can describe the event as simple or compound. So that's how we have done this question. For question number fourth. So I hope you understood it. Now let's move to question number fifth. So in question number fifth, it is saying three coins are tossed. Describe two events that are mutually exclusive. Again, the sample space will be the same, so let me write it again. Okay, remove one. So this is a sample space. Then we are asked about mutually exclusive events. So mutually exclusive events, how can we tell about mutually exclusive events? Those which are not colliding. Obvious सी बात है. Describe two events which are mutually exclusive. So we can take the same one, 3 as shown, and 2 words and 1 tail show, because we have already described the above. No, we have to tell those two events where we can say that it is mutually exclusive. So it can be taken from the question number 4 only. In question number 4, it is saying mutually exclusive event कौन से हैं, and that only we have to describe in question number 5 first part. So we can take it from here only. Simple. Then two events which are mutually exclusive and exhaustive. Now, what is mutually exclusive and exhaustive? First thing, they should not collide, and secondly, they should cover the entire sample space. So that such events can be how it can be done. Yeah. So that such events can be first we have already did. So it can be getting and head on the first coin is the first event, and this is the A event number A, which I'm telling you. Okay. And event B can be getting a tail on the first toss. First coin is first toss, sorry. Okay. So from here we can get all those situations where the first one is head. So you will get this one. Let me mark it out. We will get this one. We will get this one. We will get this one. And for all those where tail comes on the first, we will also get this one. And for all those where tail comes first, it would be this, this, and this. So these are mutually exclusive because it is not possible that on the first toss we can get both head and tail. It's not possible. So they are mutually exclusive, and since they are covering the whole sample space, so it is also exhaustive. So these two events can be said as mutually exclusive and exhaustive. Okay. So we have done the first part, second part also. Then third, two events which are not mutually exclusive that we have done above side also. We can take this. We can take A and D, like 3 had shown and I had shown on the first coin. These are not mutually exclusive because head is overlapping in both. So these two events are not mutually exclusive. So we can take this one. Then fourth, two events which are mutually exclusive but not exhaustive. Mutually exclusive है लेकिन exhaustive नहीं है. A and C, getting 3 heads and getting 3 tails. These are mutually exclusive because they are not same, and it is not exhaustive because it is not covering the whole sample space. Then 3 events which are mutually exclusive but not exhaustive. मतलब 3 events ऐसे बताओ जो mutually exclusive तो है लेकिन exhaustive नहीं है. This we have to think.
Oh, no, no, no. It's also done. Take A, B, and C. Three heads shown, and two heads and one tail shown, and C denotes the event, three tails shown. We can take these three are mutually exclusive. You can see no one is overlapping, and it is not covering the whole sample space because in sample space we have eight elements. We have eight cases, and here there are only five. So these three are mutually exclusive, but not covering the entire space, so they are not exhaustive. So question number 5 is also done. You have to just think you don't have to think out of a box. You have to just make sample space. जैसे ही अपन सैंपल स्पेस बनाएंगे वैसे अपने को सब कुछ दिखने लगेगा सिंपली. तो कोई भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहला टास्क ये रहेगा अपना कि अपन सैंपल स्पेस बनाए. सैंपल स्पेस बनाने के बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है. ठीक है. So in this way we have described the events. Then let's move to question number 6. So in question number 6 it is saying two dice are thrown. The events A, B, and C are as follows. Describe the events A dash, not B, A or B, B, A and B, and but not B, B or C, and all these. So A dash. What would be A dash? A is getting an event on the first, getting an even number on the first dice. So A dash would be not getting an even number on the first die because we have thrown two dice. So getting an even number on the first die. So what would be A dash? A dash would be getting an odd number on the first die. So it would be either getting 1 or 3 or 5. If you will get these numbers, then it would be A dash on the first die. On the first dice. Okay. So this would be A dash. Then not B is B dash. We can do it in a similar way, getting an odd number on the first die. So B dash would be getting an even number on the first die. Simple. Then A और B मतलब A और B is simply A union B. मतलब A union B का मतलब क्या होता है एक्चुअली. यूनियन का मतलब होता है कि आपको जो A में है वो भी कवर करना है, जो B में है वो भी कवर करना है, लेकिन कोई भी चीज आपको डबल में नहीं लिखनी है. तो A और B में क्या हो जाएगा. A में है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, बी में है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. दोनों कंबाइन कर देंगे तो 1 से 6 तक सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे. इवन प्लस ऑड से 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा. सो ए और बी का आंसर क्या होगा. 1 to 6 ऑन द फर्स्ट डाई. ठीक है. ए एंड बी इज इंटरसेक्शन बी टाइप ऑफ थिंग. मतलब जो ए में भी है और बी में भी हो. सो ए एंड बी इज null set because it is not possible that a number which is even can also be an odd. So a and b is a null set. A but not c is same as a minus c. मतलब जो a में है लेकिन c में नहीं है. It कोई भी even number odd number नहीं हो सकता. So a minus c is nothing but a only. Then B or C is again B union C, getting an odd number on the first die and getting the sum of numbers on the dice less than equal to 5. So sum of numbers less than equal to 5 कैसे हो सकता है. 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3 less than equal to 5. So 1 plus 4 also, and their counterparts. So we will get this many, and like if I will solve question number 4, sixth part, because it is something nice. Sixth part. सिक्स पार्ट में क्या बोला है. सिक्स पार्ट में बोला है बी और सी. बी और सी. This is said. So how can we do this? Firstly write what is B. B is getting an odd number on the first die. So 1, 3, 5 on first die. Okay. Then what is C? C is getting the sum of the numbers on the dice less than equal to 5. So it can be 1 plus 1. It can be 1 plus 2. It can be 1 plus 3. It can be 1 plus 4. And it can be 2 plus 2. Then it can be 2 plus 3. And anything else? No. And their counterparts that are to be taken. Like if I write it again, so it will be 2 plus 1 also. Then 3 plus 1 also. Then 4 plus 1 also. And 2 plus 2 are and 2 plus 3 are 3 plus 2 also.
3 plus 2 also. So these events are possible for C. Now we have to write B or C, मतलब जो B में भी है and जो C में भी है, B union C we have to write. So 1, 3, 5 on the first die and the ones from C. So it can be B और C. कैसे लिखेंगे? देखो B में क्या बोल रहा है? B में ये बोल रहा है कि सेकंड डाइस पे कुछ भी आ सकता है लेकिन फर्स्ट डाइस पे 1, 3 और 5 ही आएगा. सो बी में इवेंट हो जाएंगे वन, जितने भी फर्स्ट डैश पे वन, बाकी सेकंड डैश पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फर्स्ट डैश पे 3, बाकी सेकंड डैश पे 1, 2, 3, 4, 5, 6. मतलब बी में जो इवेंट्स होंगे वो ये वाले होंगे वन के साथ सारे, मतलब 1,1, 1,2, 1,1, सॉरी. क्योंकि समझो हम बोल रहे हैं कि बस फर्स्ट डैश पे ऑड नंबर होना चाहिए, सेकंड डैश पे कुछ भी हो सकता है. तो वन के साथ सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, थ्री के साथ सारे कॉम्बिनेशन आएंगे और फाइव के साथ सारे कॉम्बिनेशन आएंगे. सो इट बी 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, then 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Okay. Then for 5, it will be 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, and 5,6. Okay. And now what we have to do, we have to take numbers from both B and C. So B and C, firstly let me copy all the B1 elements because these are more than C. Okay. Now let's see if there is any element which is there in C but not in B. So 1,1 is there, 1,2 is there, 1,3 is there, 1,4 is also there, 2,2 is not there. So add 2,2 here. Then 2,3 is also not there, so add 2,3 also, 2,1 also. Then 3,1 is there, 4,1 is not there, so add it also, and then 3,2 is there. So this would be our answer for B or C. Which one? This one. How many elements? 1,1, 1,2, 1,3. So like 1,6 तक 6 elements. Then again 6, then again 6, 18, then 19, 20, 21, 22. So out of 36 total cases, 22 cases will be there for B or C. B or C simply implies B union C. मतलब जो B में है वो भी लेने अपने को, जो C में है वो भी लेने अपने को, लेकिन डबल नहीं लेना किसी को भी. ठीक है. तो मैंने B वाले लिखे एलिमेंट्स, C वाले एलिमेंट्स लिखे, फिर जो दोनों में मतलब दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने B और C में ले लिए. ठीक है. So this would be our B or C. Then let's go to next part, B and C. What will be there in B and C जो B में भी और C में भी है? B और C और B and C के बीच में डिफरेंस पता करना बहुत जरूरी है, ये बहुत काम आएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो. बी और सी होता है यूनियन. यूनियन मतलब जो बी में है और सी में है अपने को दोनों लेने पड़ेंगे, भले इंटरसेक्ट ना करे हो. और बी एंड सी में होता है सिर्फ इंटरसेक्शन, मतलब जो बी में भी है और सी में भी है वही अपने को लेना है. तो जो बी में भी है और सी में भी है वो कौन कौन से हुए? वो है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 एंड 3,1 एंड 3,2. सो दिस वुड बी देयर इन बी एंड सी, मतलब जो दोनों में है वही एलिमेंट्स होंगे अपने बी एंड सी में. ठीक है. So this is the case for B and C. Then the last part, eighth one, it is saying A, this sign, मैं अभी इसको समझाता हूँ. B dash, then C dash. Okay, so we need this one. Okay, so how can we do this? See what has been there. It is A intersection B complement intersection C complement. So it is talking about complements. So how can we do this thing? हाँ तो सी, अपने को चाहिए कि वो चीज ए में भी हो, बी के कॉम्प्लीमेंट में भी हो, सी के कॉम्प्लीमेंट में भी हो. तो उसके लिए अपने को जो अपन ने बी लिखा है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो लिखने पड़ेंगे. 135 ऑन द, जैसे कि अपन ने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा था 135 ऑन द फर्स्ट डैश, तो इसकी अपने को 18 केस मिलते हैं कि 1,1 से लेकर 1,6 तक, 3,1 से लेकर 3,6 तक, 5,1 से लेकर 5,6 तक, ऐसे ए डैश के 18 केस मिलते हैं.
वैसे ही अपने को बी डैश लिखना पड़ेगा, वैसे अपने को सी डैश लिखना पड़ेगा। तो अपन लोग लिखेंगे बी डैश के एलिमेंट्स, अपन लोग लिखेंगे सी डैश के एलिमेंट्स। बी डैश के एलिमेंट्स क्या होंगे, सैंपल स्पेस माइनस जो बी के एलिमेंट्स है। सी डैश के एलिमेंट्स क्या होंगे, सैंपल स्पेस माइनस जो सी के एलिमेंट्स है। ए के तो अपने को एलिमेंट्स पता ही है। सो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, दैट वुड बी अवर ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। सो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि इसमें अपने को तीन का इंटरसेक्शन लेना है, बाकी सब सेम है। और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सैंपल स्पेस में से जो भी अपना एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इन दिस वे वी कैन डू द सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट इजली। ठीक है, नाउ let's move to question number 7. What it is saying, it is saying refer to question number 6 above, then state true or false. Okay, give reason for your answer. ठीक है, A and B are mutually exclusive. A and B are mutually exclusive. So A is 135 on first dice. So from A we will get 18 elements, and B is given getting an odd number on the first die. Obviously, they are mutually exclusive. This is true. So question number 7. So 7, first part. It is true, but of course, because in we are mutually exclusive. Since they are mutually exclusive, why they are mutually exclusive? Because getting an even number on the first die and getting an odd number on the first die, these both can't appear simultaneously because an even number can't be equal to an odd number in any case. So this is true, and the reason is obvious because A is getting an odd number on the first die, B is getting an even number on the first die, and even an odd number can't be equal at any case. So A and B are mutually exclusive. Then A and B are mutually exclusive and exhaustive. Again, it is true because one is getting an odd number on the first die, second is getting an even number on the first die. So odd number on the first die, 1, 3, 5, and second die is every element. So 1, 1 से लेकर 1, 6 तक, 3, 1 से लेकर 3, 6 तक, then 5, 1 से लेकर 5, 6 तक. This is our even number B. And what is A? A है 2, 1 से लेकर 2, 6 तक सारे, फिर 4, 1 से लेकर 4, 6 तक, फिर 6, 1 से लेकर 6, 6 तक. तो इन दोनों एलिमेंट्स को जब अपन लोग मिलाएंगे तब सारे एलिमेंट्स पूरी सैंपल स्पेस कवर हो रही है. सो इट इज एग्जॉस्टिव. ठीक है, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस. ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव, यस. देन ए इज इक्वल टू बी डैश, ऑब्वियस सी बात है, ये सी होगा, ये भी ट्रू है. सेकेंड is also true. Then third is also true. Why? Because A is equal to B dash. Obviously, बात है. B is getting an odd number on first die, so B dash should be getting an even number on the first die. So A and B will be same. A and B dash will be same. Then A and C are mutually exclusive. A and C are mutually exclusive. A is getting an even number on the first die, and C is getting the sum of number on dice less than equal to 5. No, they are not mutually exclusive because sum of number can be 2 plus 3 also, and 2 is an even number. So A and C are overlapping, so they are not mutually exclusive. So fourth one is false. इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो एग्जाम्पल 2 plus 3, because 2 plus 3 is 5, it is less than equal to 5, and 2 is an even number also. So since 2 comma 3 is there in both the cases, so A and C are not mutually exclusive. Okay, then in fifth part, it is saying A and B dash are mutually exclusive. A and B dash are mutually exclusive. So see, A and B dash are mutually exclusive. How it can be done? We have A, yes, getting an even number on the first die. We have B dash is again getting an even number on the first die. So they are not mutually exclusive. They are actually same. You can see B dash is not nothing but getting an even number on the first die, because B is getting an odd number on the first die. B dash would be getting an even number on the first die, just reverting it. So A and B will become same. So they are not mutually exclusive. Instead, they are same. So fifth one is also false. Then coming to sixth one, it is saying A dash, B dash, and C are mutually exclusive and exhaustive. A dash and B dash, A dash is nothing but B, B dash is nothing but C. So A and B are in themselves mutually exhaustive.
and then it is saying C also. C is mutually exclusive, but C will definitely overlap with A dash and B dash because getting the sum of numbers on the right less than equal to 5 is possible in many cases. 1 plus 1 is also there, which would overlap with case number, which would overlap with A, and 2 plus 2 is also there, which would overlap with B. So C can't be mutually exclusive with A dash and B dash. So sixth part is also false. The reason is same because C can't be mutually exclusive with A dash and बी डैश ऑब्वियस बात है ना मतलब आप खुद देख लो ए डैश में अपने को मिलेंगे सारे वो वाले नंबर जिसमें और नंबर चालू हो रहा है बी डैश में मिलेंगे सारे इवेंट चालू होने वाले नंबर इवेंट चालू होने वाले में अपन लोग एग्जांपल ले सकते हैं 2 plus 2 का और से वाले में अपन लोग ले सकते हैं 1 plus 1 का क्योंकि अपने को सम लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए ना लेस देन इक्वल टू 5 तो 1 plus 1 भी होता है 2 plus 2 भी होता है और वो दोनों ए डैश और बी डैश में लाइक कर रहे हैं तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सो इस पॉइंट पे ये लेक्चर खत्म होती है तो बेसिकली मैंने क्या बताया मैंने आपको ये बताया है कि अपने को सिर्फ सैंपल स्पेस लिखनी आनी चाहिए आफ्टर राइटिंग द सैंपल स्पेस we can easily comprehend the questions which are given to us. We have to just set the sample space out there. Then, for mutually exclusive, we have to see the images should not overlap. For exhaustive, the sum of the all combining all the events, if we are getting the sample space, then it is said to be exhaustive. And if they're not same, then we can say it to be mutually exclusive. Okay, simple even is that where we are getting only one outcome. Compound even is that where we are getting multiple outcomes. So in this way, these are the four type of events which can be asked to us. And coming to and odd thing, odd is nothing but union. Union is nothing but you have to take the elements which are like if there's A union B, so you have to take the elements from both A and B. मतलब जो elements A में है वो भी आएंगे और जो elements B में है वो भी आएंगे और A intersection B में क्या होगा A intersection B में ये होगा कि जो elements दोनों में है सिर्फ वही आएंगे ठीक है जैसे कि अगर A है 1 2 3 B है 3 4 5 so A union B would be 1 2 3 4 5 and A intersection B would be only 3 because it is 1 2 3 and 3 4 5 only 3 is common so A intersection B is 3 but A union B is 1 2 3 4 5 A minus B is elements present in A but not present in B B minus A is elements present in B but not present in A so in this way we will do it and elements complement is nothing but sample space माइनस दैट एलिमेंट मतलब अगर बी का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो जो भी अपनी सैंपल स्पेस होगी माइनस जो बी के एलिमेंट्स उनको हटा देंगे दैट वुड बी बी कॉम्प्लीमेंट so these are the terminologies which we studied in the first exercise one more thing you have to remember the sample space for causing two for tossing three heads it will come again and again but you don't have to remember but you should know how to write the sample space and that one also that playing with two dice simultaneously. So there will be 36 outcomes in the sample space from 1 comma 1 to 6 comma 6. So you have to know how to write the sample space for these type of cases, and then you can easily proceed further with the other questions. So it is actually easy, not tough. This exercise actually made your base, and now we will move to second exercise in our next session. So I hope you understood it. Thank you.